Good morning, student. We are discussing up to now the sampling distributions and sample design. And we have also discussed few sampling distributions such as say chi-square distribution. We discussed the F distribution. We discussed Z distribution and also the T distribution. So we just introduce these distributions in order to understand the concept of test of significance. So what is tests of significance? In statistics, basically there are two branches. First branch is descriptive statistics and other branch is inferential statistics. In descriptive statistics, we have studied the mean, median, mode, mean central value, as well as some graphical representation of the data. Then measure of dispersion in order to study how much data is scattered about mean or any value. And in inferential statistics, we use various distribution in order to test the hypothesis. So statistical inference involves drawing conclusions about a population based on the drawn sample or sample data. So, in statistical inference, which involves drawing conclusions about the populations based on sample data. Now, to measure area of statistical inference is estimation of parameters and testing of hypothesis. So we will explain what is hypothesis, how the parameters are estimated, and I have already explained that on the basis of sample observation, we will estimate sample mean, and which this mean can be used for estimation of population parameter population mean. Similarly, sample standard deviation or sample variance S square is again used to estimate the population variance. So in first part of statistical inference, we have estimation of parameters. And second part is tests of significance, which is also known as hypothesis testing. So in this lecture, we will discuss hypothesis testing. So what a question arises, what is hypothesis? What is a statistical hypothesis? So statistical hypothesis is any statement or any assumption about a population or its parameter. हम पॉपुलेशन के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं. फॉर एग्जांपल, द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज से 120 centimeter. So this statement is a hypothesis. And in testing of hypothesis, we will decide whether the given statement is true or false based on the sample data. So in a statistical hypothesis is a statement or assumption about a population or its parameter, and decision about its truth or
falsity are based on sample data. So what we do is from population, we will draw sample, we compute sample statistic, and then using certain distribution, we will test our assumptions or our hypothesis for a particular parameter. So the hypothesis, statistical hypotheses are of two type. First one is the simple hypothesis. So in simple hypothesis which specify the population distribution completely. अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि and it is represented by H0 or H1. H0 states for null hypothesis. It is known as null hypothesis. नल हाइपोथेसिस को हम एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और हर नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है जिसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. सो in this example you will say under null hypothesis a random variable x is distributed binomially with mean 10 with n number of, because if x is distributed binomially then it has two parameters n and p. N stand for the number of observation and p is the probability of success. So in this case both the things are given to us, means nothing is left. So with the help of these two parameters we can define the population completely. We can find out its mean, we can find out its variance. So you completely describe the population. Another example, suppose under null hypothesis, it is given that any variable x is normally distributed with mean 5 and variance 20. So in this case, again, if any random variable normally distributed with two parameters, because the parameter of the normal distribution are mu and sigma square. If they are known to us, we can find out its mean, we can find out its variance and many properties. So you can define this distribution completely if these two values are given to you. In this case, the values are given as 5 and 20. That's why with this hypothesis, you can completely describe the normal population. So, if you can specify the population distribution completely, any hypothesis which specifies the population distribution completely is known as simple hypothesis. So, these two are the example of simple hypothesis. इन वैल्यूज से हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन की उस रैंडम वेरिएबल की सारी प्रॉपर्टीज हम निकाल सकते हैं. Second type of hypothesis is composite hypothesis. So composite hypothesis is that hypothesis which does not specify the population distribution completely. उसमें क्या होगा कि आपको एक पैरामीटर दे दिया, दूसरा अननोन है, ठीक है, तो उस केस में हमें अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करना पड़ेगा और हम पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते. सो सेकंड हाइपोथेसिस इज कंपोजिट हाइपोथेसिस which does not specify the population distribution completely. Example involves if x is a binomial distribution with 10 and p. Here n is given to you but p is unknown. That's why you cannot describe the distribution completely. And or you cannot specify the distribution completely because this is unknown to you. You have to estimate this p on the basis of sample or some other criteria. Similarly, if x is distributed normal with unknown mu and variance given to you. So these are the example of simple and composite
hypothesis. In simple hypothesis, all the parameter values are given to you, but in composite hypothesis, one or more values are unknown to you. Then hypothesis may be, I have already specified that it may be null hypothesis or it may be alternate hypothesis. तो null hypothesis क्या है, alternate hypothesis क्या है? So null and alternate hypothesis. First we define null hypothesis, which is represented by H0, the hypothesis being tested for rejection. Any statement regarding population parameter which we are willing to reject is known as null hypothesis. And alternative to this null hypothesis, there is an alternate hypothesis which is represented by H1. The hypothesis accepted only when H naught is rejected. When this hypothesis is rejected, then we can accept H1. So, the acceptance of one hypothesis implies the rejection of other. So you can say acceptance of one hypothesis implies the rejection of other. अगर एक को आपने accept कर लिया, उसका मतलब क्या है कि दूसरे को आपने reject कर दिया. Now, when you test the hypothesis, we commit two types of error in testing of hypothesis. So, we will study which types of error they are and how to minimize them. So, first of all, we make a table in which accept H naught and reject H naught. Then on rows, if H0 is true and H0 is false, then it's decision. मान लो आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ट्रू था, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इट मींस नो एरर इज देयर. नल हाइपोथेसिस ट्रू था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, एक सही चीज को आपने गलती से रिजेक्ट कर दिया, देन देयर इज ए एरर विच इज नोन एज टाइप 1 एरर. सिमिलरली इन सेकंड केस कि मान लो आपका एच नॉट फॉल्स है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर आपने कमिट की है. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. देन फोर्थ पॉसिबिलिटी, सपोज H0 इज फॉल्स, ट्रू नहीं था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, इट मींस यू हैव टेकन करेक्ट डिसीजन. सो इन ऑल फोर पॉसिबिलिटीज, टू आर करेक्ट and two are incorrect. And for incorrect, if H0 is true and you reject it, then you will commit one type of error. If H0 is false and you accept it, then you commit another type of error. So let us define these errors. Type 1 error, rejecting a true null hypothesis. Rejecting a true null hypothesis H naught is known as type 1 error, and it is the probability of type 1 error is called the level of significance. इन हम आगे पढ़ेंगे इसको. Then type 2 error, accepting a false null hypothesis. Accepting a false null hypothesis. Type 2 error means you accepting null hypothesis but it is false. Now, in testing of hypothesis, it is desirable to minimize these two errors. क्योंकि error होगा तो हम उसको minimize करना चाहेंगे. So, it is desirable to minimize both these errors when the sample size is fixed. When your sample size is fixed, then if you reduce one error, then other error automatically increases. So you cannot reduce both error simultaneously. So what we do is we generally fix this type 1 error alpha
this error, level of significance, and we choose a test in such a way which minimize the probability of type 2 error, right? So when you when we discuss the example, these things will be clear to you. Now there are certain concept of testing of hypotheses which are key concept. So how these key concepts are used? So let us start. फर्स्ट वन इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो हमने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस which is denoted by alpha is nothing but probability of committing a type 1 error, right? And another term we will use in testing of hypothesis is p value, which indicates the strength of evidence against h naught, which indicate the strength of evidence against H naught. And smaller p values suggest stronger evidence of rejecting H naught. तो जितनी आपकी p वैल्यू छोटी होगी उतने ही हमारे पास H नोट को रिजेक्ट करने के एविडेंसेस ज्यादा होंगे. देन नेक्स्ट टर्म वी विल यूज इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. सो ए स्टैटिस्टिक, मैंने आपको बताया था, इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट एच नोट. जो हमने आपको टेस्ट स्टेटिस्टिक्स बताई थी बहुत सारी, जिसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, मैंने एफ बताया था, मैंने काई स्क्वायर बताया था, मैंने जेड डिस्ट्रीब्यूशन बताया था. दीज आर द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स. we will use these test statistics in order to decide whether to reject or accept the null hypothesis. और यू कैन से टी का एक फार्मूला है, एफ का एक फार्मूला है, काई स्क्वायर भी एक फार्मूला है, जेड भी एक फार्मूला है, जो किसी पॉपुलेशन पैरामीटर को टेस्ट करने के लिए यूज होता है. सो इट्स फार्मूला डिपेंड ऑन द पैरामीटर बीइंग टेस्टेड. ये अगर आपको मीन टेस्ट करना है तो एक फार्मूला होगा, अगर आपको सिग्मा स्क्वायर टेस्ट करना है तो दूसरा फार्मूला होगा. देन वी हैव अनदर टर्म विच इज नोन एज क्रिटिकल रीजन. क्रिटिकल रीजन कहाँ होता है? एक सैंपल स्पेस में एक एरिया होता है, द रीजन ऑफ द सैंपल स्पेस, जहां पे हम एच नोट को रिजेक्ट करते हैं. सो इट इज द रीजन ऑफ द सैंपल स्पेस वेयर एच नोट इज रिजेक्टेड. एंड अनदर इज one tail test or two tail test. So various tests are used to reject or accept the null hypothesis. So, so these tests are one tailed, in which we will our alternate hypothesis may be in both sides. One tail test is that test in which alternate hypothesis may be left-handed or it may be right-handed. So let us start. So one tail test tests a one side alternative hypothesis. एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं कि मान लो अंडर नल हाइपोथेसिस में म्यू इज इक्वल टू 20 एंड its alternative hypothesis is like that mu is greater than 20. So we will check whether it is more or not. So it is one tail test. We will take its right side, and if our null hypothesis is like that mu is equal to 20 and alternate hypothesis mu is less than 20, so we will check it's the left hand side, whether mu is less. Less means left hand side and more is right hand side. And there may be another test in which you want to test mu is equal to say 20 and mu is not equal to 20. We are not decide
which side the mu may lie. It may be less than or it may be more than. So your alternate is in both sides. So that is two-tailed test. So in one-tailed test, one-sided alternative hypothesis is there. Example, I have explained it. Mu is equal to say mu 0 versus mu is greater than mu 0. और अल्टरनेटिव आपका टू टेल्ड टेस्ट क्या होगा? टेस्ट ए टू साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। टू साइडेड का मैंने बताया कि अगर म्यू को आपने म्यू नोट से टेस्ट किया है तो अल्टरनेट होगा आपका म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नोट। इट मे बी लेस देन और इट मे बी मोर देन। Then another term we will use in testing of hypothesis, it is very important, is the degrees of freedom. So degrees of freedom are the number of independent observation in a statistic. एक statistics में कितनी independent observation है? Suppose there are n observations and on these n observation we impose k restrictions, then the independent observation remaining, उसमें से n ऑब्जर्वेशन थी उनमें से हमने k पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो इंडिपेंडेंट कितनी रहेगी? these are n minus k. So the degrees of freedom will be n minus k. Let us take an example to understand it more. Suppose three values are chosen such that their sum is fixed at 40. Their sum is fixed at 40. So only two value can be chosen independently. कि मान लो तीन वैल्यू हैं आपकी 20 और 10 और 10, राइट? आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि उनका सम 40 होना चाहिए। तो आपने मान लो ये दो वैल्यू तो इंडिपेंडेंटली आप चूज कर सकते हो, तीसरी वैल्यू आप इंडिपेंडेंटली चूज नहीं कर सकते in order to complete the sum 40. So there is only two independent. You can choose only two independent values, and third is based on this restriction. Means we want to make the sum 40. So after choosing two values and whose sum is less than of course 30, 40, then we will choose third value in such a way that sum will be equal to 40. So there is one restriction. Out of choosing three value, we impose one restriction of getting their sum 40. That's why its degrees of freedom will be 2. Clear? Now we will move towards actual testing of hypothesis. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं? या तो हम मीन को टेस्ट करेंगे, किसी सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के बराबर है या नहीं है, या कोई आपने स्टेटमेंट इस तरह की दे दी कि मान लो मैंने कहा कि एवरेज यील्ड ऑफ ए वैरायटी इज 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, तो मैंने 20 क्विंटल पर हेक्टेयर एक स्टेटमेंट दे दी एंड यू वांट टू टेस्ट माय स्टेटमेंट। या मैं ये कहता हूं कि द एवरेज यील्ड ऑफ वैरायटी ए इज इक्वल टू द एवरेज यील्ड ऑफ वैरायटी बी। तो यहां भी एक स्टेटमेंट है, यू वांट टू कंपेयर द एवरेज यील्ड ऑफ वैरायटी ए विद एवरेज यील्ड ऑफ वैरायटी 2 एंड सो फोर्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन्स। मीन को मीन का टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आप कैसे करोगे? सो लेट अस स्टार्ट। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मीन, तो इसमें तीन चार पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट इज नोन एज वन सैंपल जेड टेस्ट। कब यूज होता है? इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर पॉपुलेशन मीन दिस म्यू इज इक्वल टू ए स्पेसिफाइड मीन म्यू। मैंने कहा ना एवरेज यील्ड ऑफ ए वैरायटी इज 20 क्विंटल per hectare. So this mu naught is here 20 quintal per hectare. So you want to test this specified value with the population mean. Used to test whether your population mean mu, which is actual population mean, is equal to a specified value. उसके बराबर है या नहीं है।
And condition is when population standard deviation sigma is known to you, or when either the sigma is known to you and your sample size is large, which is more than 30. These are two conditions where one sample Z test can be used. Of course, this test is based on certain assumptions. What are these assumptions? First assumption we will take is population is normally distributed. This is very important assumption. If population is not normally distributed, then you cannot apply this Z test. Number two, the population variance or standard deviation, which is sigma, is either known, or the sample size is large. Large means it should be more than 30. Then how you will test the one sample Z test? How will you perform the one sample Z test? So there are certain steps, and these steps are in every test. So first of all, you should formulate the null hypothesis. सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे, नल हाइपोथेसिस स्पेसिफाई करोगे. नल हाइपोथेसिस हमारा क्या है कि वी वांट टू टेस्ट द पॉपुलेशन मीन विद ए स्पेसिफाइड वैल्यू. जैसे मैंने कहा कि द एवरेज यील्ड ऑफ ए वैरायटी इज 20 क्विंटल पर हेक्टेयर. So this mu naught is a specified value. So we assume that under null hypothesis, the given statement is correct. So mu is equal to mu naught. So what is its alternate hypothesis? हम इसका उल्टा बोलेंगे. क्या कहेंगे? Mu is not equal to mu naught. Then we will choose a level of significance or type 1 error alpha in advance. Alpha को हमने चूज करना है 0.05 or 0.01 डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी. इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो. देन यू कंप्यूट ए स्टैटिस्टिक्स विच इज नोन एज जेड, विच इज गिवन बाय एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन. राइट नाउ, अब आप कहोगे जी एक्स बार कहां से आ गया? अभी तो आप म्यू और सिग्मा की बात कर रहे हो. तो हम क्या करेंगे कि हमारी एक पॉपुलेशन है, वी हैव ए पॉपुलेशन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, whose mean is mu and variance is sigma square. It is known to us. Sigma square is known to us, and we want to test this mean with a specified value, say mu naught. ठीक है, इस मीन को हम इसके साथ टेस्ट करना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे? पूरी पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते. तो वी विल टेक ए सैंपल ऑफ साइज से एन. वी विल टेक ए सैंपल ऑफ साइज एन. इस पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल लिया, हमने 20 प्लॉट लिए. 50,000 एकड़ की जमीन में से एक एक एकड़ के 20 प्लॉट इसमें से सिलेक्ट किए, एंड ग्रो दैट वेराइटी in these 20 plots. So my n is say 20, and then these are the plots which I have selected for my sample. These are 20 plots. Then I record the yield of every plot and find out its mean, and that is your x bar. तो ये x bar है वो आपका ये वाला है. एंड सिंस सिग्मा इज नोन टू यू, आपने पॉपुलेशन की वेरिएशन का पता है, या आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन 30 है, मींस एन आपने 40 ले लिया. इन दैट केस दिस सिग्मा कैन आल्सो बी कंप्यूटेड by sample standard deviation, s square, which is nothing but it is 1 minus n sigma xi minus x bar whole square. Now the sigma is replaced by this s. Clear? So you compute this value of z, which is x bar. x bar इस सैंपल का जो मीन आएगा वो है. म्यू नोट जो वैल्यू मैंने नल हाइपोथेसिस में अज्यूम की है, सो इट मे बी से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर.
divide it by sigma. Sigma is given to you, or your sample size is more than 30, then you can compute this, estimate this sigma with the help of S square. Substitute all these values and find out the value of Z. Now, you can write like that: if sigma is unknown, but your sample size is more than 30, sigma, replace sigma with स्टैंडर्ड डेविएशन एस। इस एस से हम इसका, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, देन एस इज नथिंग बट इट इज 1/n-1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो उसको सिग्मा की जगह रख देंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी, या तो आपको ये सिग्मा दिया हुआ होगा, या आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा होगा, तो ही आप वन सैंपल जेड टेस्ट यूज करोगे, राइट? And if your sample size is more than 30 and sigma is not given, then you compute S from the sample and substitute S in place of sigma, right? Then next thing, then it becomes like this. I have already explained. Z will become X bar as such, mu as such. I just replace sigma with S and under root n, where S square can be computed 1 upon n minus 1 summation xi minus x bar whole square. Now, how you will decide whether to reject or accept? Then conclusions. In conclusion, we will reject the null hypothesis if our this z calculated value from this formula or from this formula is greater than z tabulated. मैंने बताया था z की tabulated value हमारे पास available है, and you can check the z values for a particular degrees of freedom and a level of significance. At a Susan alpha level, तो अब मैंने बताया, मैं कुछ वैल्यूज आपको दे देता हूं जनरली। फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.05, जेड की जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो 1.96 आती है, एंड फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.01, जेड की टेबुलेटेड 2.58 होती है। तो अगर आपकी कैलकुलेटेड जेड, and if you want to test at 5% level of significance or 0.05 and your z comes out greater than 1.96, then you reject your null hypothesis, otherwise do not reject it. So let us take an example which makes the thing more clear to you. Example देखिए आप, the number of apple per tree in a particular region is known to be 520. ये एग्जाम्पशन है। ये मान लो कि एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ एप्पल्स हैं वो ऑन एन एवरेज 520 है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4, मींस सिग्मा इज गिवन। यू टेक ए सैंपल ऑफ 20 trees and that tree gave you a average of 450 apple per tree. Now test whether the sample average is in agreement with the known. हम क्या चेक करना चाहते हैं कि 450 एप्पल पर ट्री इज सेम और डिफरेंट विद 520 एप्पल, जो कि बिलीफ है वहां का। what are the things given to you? You have given that the mean of the 20 trees average is 450, n is given to you, sigma is given to you 4, म्यू नोट इज गिवन टू यू 520। इसके अगेंस्ट आपने चेक करना है। अल्फा आपने 0.05 ले लिया। सो दीज थिंग्स आर गिवन टू यू। नाउ व्हाट इज योर हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस हम क्या करेंगे कि म्यू इज इक्वल टू से म्यू नोट। अब म्यू नोट आपका कितना है? 520। सो वी विल टेस्ट म्यू इज इक्वल टू 520 अगेंस्ट म्यू इज नॉट इक्वल टू 520। ये आपका नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, ये अल्टरनेट हो जाएगा। तो अंडर नल हाइपोथेसिस म्यू विल बी 520 एंड योर अल्टरनेट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 520। नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन कीजिए। आपको सिग्मा नॉन है, नॉन है तो हम क्या करेंगे?
we will use Z test, which is nothing but x bar minus mu naught over sigma by under root n. यही होगा. तो we will use this test statistics. Z calculated, x bar is given to you 550, mu naught is given to you 520, sigma is given to you 4, and this is n under root 20. So you will find out this value. Now you compare this value with the tabulated one. So your conclusion will be, since Z calculated, अब Z calculated आपकी जो है इसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी है, आपने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना. सो इट इज 78.26 and Z tabulated at 5% level is 1.96. ठीक है. अब Z कैलकुलेटेड आपकी Z टेबुलेटेड से बहुत ज्यादा है. So what we do is we will reject H naught. It means we can say that sample mean is not in agreement with the known value. कहने का मतलब ये है कि the number of apple per tree is not equal to 520. Now there is another version which is known as one sample t test. अब सेकंड आपके पास कंडीशन आ गई है कि आप सेम ही चीज टेस्ट करना चाहते हो. आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैंने बताया था कि सिग्मा स्क्वायर इज नॉन और n इज ग्रेटर देन 30. अगर मान लो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, आपका सिग्मा स्क्वायर भी नॉन नहीं है, इट इज अननोन, आपको नहीं पता है, और आपका सैंपल साइज भी लेस देन 30. In that case, we will use one sample. In that case, we will use one sample t test, not Z test, right? So let us start. So one sample t test is used to test whether the population mean mu is equal to a specified value Z की तरह ही है. When population standard deviation sigma is unknown or not known and sample size is small which is less than 30. Assumption इसकी वही है. पहली assumption है कि population normally distributed होनी चाहिए. The population is normally distributed. Number 2, sample size is small. And number 3, the population standard deviation sigma is not known. So you will use a t test which is given by x bar minus mu naught over s upon under root n. यहाँ पे हमें सिग्मा नॉन नहीं है, s मैंने आपको बता दिया, and s can be calculated by 1 upon n minus 1 sigma xi minus x bar. सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन से हम सिग्मा को एस्टिमेट करेंगे. So your test statistics will be t, which is given by x bar minus mu naught s upon under root n, and s square can be calculated like this. And this value, this test statistics will follow a t distribution, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था स्टूडेंट t के बारे में. This t follow the t distribution with n minus 1 degrees of freedom. So the test statistics follows a t distribution with n minus 1 degrees of freedom. Now, how you can conclude whether to accept h naught or not? इसमें भी हमारा नल हाइपोथेसिस मैंने नहीं लिखा कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट है. अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है. कंडीशन अल्फा मैंने इन एडवांस फिक्स कर दिया 0.05, राइट. एंड वी विल sigma is unknown and our sample size n is less than 30. तो क्या करेंगे, वही पॉपुलेशन है आपकी जिसका सिग्मा आपको अननोन है, आपको नहीं पता इसका क्या वेरिएंस है. यू टेक ए सैंपल ऑफ साइज से 25 और 18 और लेस देन 30, आप कोई भी सैंपल लीजिए
find out its mean x bar, find out its standard deviation or s square sample variance, and put these value in this formula in order to accept h naught or reject h naught. So in conclusion, we will compare this t calculated value with this t tabulated value at n minus 1 degrees of freedom and at a certain level of significance. Here it is say 0.05 or it may be 0.01. तो जो t की टेबुलेटेड वैल्यू आएगी उसको आप नोट कर लोगे. You just note it down and compare it with the t calculated. If your t calculated is more than t tabulated, टेबुलेटेड वैल्यू से कैलकुलेटेड टी ज्यादा हो तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. इट मींस वी कैन से your population mean is not equal to the specified value. Otherwise you accept it. अगले एग्जाम्पल से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी. ए न्यू फीड वाज गिवन टू 25 एनिमल्स. तो 25 आपको मिल गया, एन आपके पास 25 है. ठीक है. And it was found that average gain in weight is 7.18 with a standard deviation this much. So it means its sample mean is given to you, it is 7.18 and S is given to you 0.45. ये सैंपल की इंफॉर्मेशन है. दिस इज सैंपल साइज, दिस इज सैंपल मीन, दिस इज सैंपल standard deviation. Is the performance of new feed is similar to the performance of standard feed whose average is 7.0? So your mu naught here given as 7.0 kg. Now अब देखिए आपके पास पॉपुलेशन सिग्मा अननोन है, पता नहीं है आपको, लेकिन ये तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है ना. सिग्मा आपको, सिग्मा स्क्वायर इज अननोन टू यू एंड एन इज लेस देन 30. तो आपका कहाँ जाएगा ध्यान? टी टेस्ट की तरफ. वी विल यूज टी टेस्ट टू टेस्ट वेदर द स्टैंडर्ड फीड्स एवरेज इज इक्वल टू or not 7.18 kg. So let us start. So what is given to you? Your stepwise solution. You have given n is equal to 25, x bar is 7.18, s is this, mu is this, alpha is this. Everything is given to you. Your null hypothesis that mu is equal to 7 kg. Against the alternate, it is not equal to 7 kg. Alpha we have defined 0.05. Then test statistics will be your t, which is nothing but x bar minus mu over s upon under root n. So t calculated will be x bar, it is 7.18, mu naught 7.0, s is 0.45 and under root of 25, it comes out to be 2.0. Then we will find out the degrees of freedom n minus 1. It is 25 minus 1, so it is 24. Now we will find out t tabulated value at 24 degrees of freedom at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ये हम टी से वैल्यू निकालेंगे. तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए ये वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली. इट कम्स आउट टू बी 2.06 एट अल्फा 0.05 and 24 degrees of freedom. Now what conclusion you made? Since t tab calculated is 2, which is less than 2.06, so we will not reject the null hypothesis. What you say? Conclusion, since t calculated is less than t tabulated, we will accept null hypothesis. H naught, what does it mean? H naught हमारा क्या है कि 7.0, the new feed's performance is similar to the standard feed. Although we will get 7.18, which अगर हम सुपरफिशियली इसको देखें तो 7 और 7.18 अलग अलग हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली दे आर एट पार, उनमें कोई फर्क नहीं है.
देन वी विल डू वन मोर टेस्ट. ये तो एक सैंपल की बात है कि यू वांट टू फाइंड आउट ए सैंपल मीन एंड टेस्ट दैट मीन विद ए स्पेसिफाइड. नाउ it may be possible that you want to compare the mean of two sample. कि मान लो आपकी एक वैरायटी है, उसकी एवरेज को आप दूसरी वैरायटी की एवरेज से कंपेयर करना चाहते हो. ठीक है, क्या वो एक जैसी हैं या वो अलग अलग हैं स्टैटिस्टिकली. तो उसको हम बोलते हैं टू सैंपल जेड टेस्ट. और इसका अल्टरनेट जब आपका सैंपल साइज छोटे होते हैं तो टू सैंपल टी टेस्ट. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू सैंपल जेड टेस्ट. This test is used to compare means of two population to determine if they are significantly different or not. ये मान लो आपके पास दो पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन ये है, एक पॉपुलेशन ये है. इनका कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. देन यू वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. अंडर नल हाइपोथेसिस यू वांट टू टेस्ट दैट पॉपुलेशन मीन ऑफ दिस पॉपुलेशन का मीन मान लो म्यू 1 है, इस पॉपुलेशन का मीन म्यू 2 है. एंड अंडर नल हाइपोथेसिस वी वांट टू टेस्ट वेदर म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 0 और नॉट. दी मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन आर इक्वल. अल्टरनेट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा. H1 म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2. सो ये टू टेल्ड टेस्ट हो जाएगा. अगर आप वन टेल की बात करो तो हम कहेंगे म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2. इसको हम राइट टेल टेस्ट बता देंगे जैसे पहले बताया था. एंड इफ म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2 सो इट इज लेफ्ट टेल टेस्ट. अब देर आर टू केसेस ऑफ सैंपल जेड टेस्ट. पहला केस है जब इन दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस नॉन हो. म्यू तो हमें पता है, ये तो हम कंपेयर करना चाहते हैं. सपोज द variance of this population is sigma 1 square and variance is this population sigma 2 square. So what are the assumptions in this case? Population are normal, means this population is normally distributed with mean mu 1 and variance sigma 1 square. This population also distributed normally with mean mu 2 and variance sigma 2 square, right? Then samples are independent and randomly selected. इस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया है इंडिपेंडेंट और इस पॉपुलेशन से सैंपल लिया है. थर्ड कंडीशन, वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर नोन. ये हमें पता है जिस तरह वन सैंपल में हमने किया. देन वी विल यूज ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज नोन एज जेड टेस्ट. दिस इज नथिंग बट इट इज x1 बार माइनस x2 बार, डिवाइड इट बाई sigma 1 square upon n1 plus sigma 2 square upon n2. Right? So you will use this test statistics. यहाँ पे x और y ले लिया मैंने, x1 और x2 भी ले सकते हो. आप क्या करोगे, इसमें से एक सैंपल लोगे whose size is n1, find out its mean, it is say x1 bar. You take another sample from this population and size of this sample is n2. Find out its mean x2 bar. You want to compare the mean of this sample is equal to or not with this population. So you will use this formula, right? यहाँ y bar को भी आप लिख सकते हो या otherwise you can write like that. Then what is your test criterion? If h naught, reject h naught if your this z calculated is greater than z tabulated. अब z टेबुलेटेड वैल्यू मैंने आपको बताई है कि 0.05 पे होती है 1.96 और इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये होती है 2.52 या 2 समथिंग लाइक दैट. सो z tabulated is 1.96 for alpha is equal to 0.05 and it is 2.58, sorry this is not 2.58 for this. कि आपकी z की वैल्यू अगर 1.96 से बड़ी होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. देन सेकंड केस, व्हेन वेरिएंसेस आर नॉट नोन. जैसे हमने बताया था कि आपकी एक पॉपुलेशन है
दूसरी भी पॉपुलेशन है, उनके वेरिएंस आपको नहीं पता। So if population variances are unknown but sample sizes is large, यहाँ पे कंडीशन ये है कि सैंपल साइजेस आपके दोनों सैंपल्स के 30 से बड़े हैं, देन एस्टिमेट द वेरिएंस फ्रॉम सैंपल्स। मैंने कहा था ना, आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पहले सैंपल की निकालिए, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सैंपल एंड एस्टिमेट सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर। एस्टिमेट का मतलब क्या है कि सिग्मा वन की जगह आप S1 रख दीजिए और S2 रख दीजिए, उनका पोल्ड वेरिएंस हम निकाल लेंगे। And then what are the assumptions? Again, populations are normal, samples are drawn independently and at random, and population variances or standard deviation are unknown to you. Sizes of the samples are large, means more than 30. You will use the test statistics z x bar minus y bar over s1 square upon n1 s2 square upon n2। अब आप देखिए कि ये आपकी एक पॉपुलेशन थी, ये एक पॉपुलेशन थी, ठीक है। इस पॉपुलेशन से आपने एक सैंपल लिया, इस पॉपुलेशन से एक सैंपल लिया, इस सैंपल का साइज n1 था, इस सैंपल का साइज n2 था। सिंस सिग्मा वन स्क्वायर एंड सिग्मा टू स्क्वायर, ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है जिसका मीन म्यू है एंड वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर है। ये भी एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है जिसका मीन म्यू टू है एंड वेरिएंस सिग्मा टू स्क्वायर। लेकिन हमें सिग्मा वन एंड सिग्मा टू स्क्वायर नहीं दिए हुए, वी आर नॉट नोन टू यू। वी वांट टू टेस्ट these two samples are independently drawn or not, means their means are equal or not। इस सैंपल का मीन मान लो x बार है, इस सैंपल का मीन y बार है। आई वांट टू कंपेयर whether the difference this x bar minus y bar is equal to 0 or not, तभी ये एक दूसरे के बराबर होंगे। So what I do is I just take the difference of these sample means and divide it by, अब इसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर हमें पता नहीं है, सिग्मा टू स्क्वायर हमें पता नहीं है, then we will compute S1 square from this sample which is given by 1 by n1 minus 1 summation xi minus x bar whole square। S2 square I will compute, this is 1 upon n2 minus 1 and summation say yi minus y bar whole square, and substitute these value here, where you can find out S1 square as 1 upon n1 minus 1 summation xi minus x bar, S2 square is nothing but it is 1 upon n2 minus 1 yi minus y bar square, and then we will decide whether to select or not on the basis of z calculated and z tabulated। Here is an example which makes the things more clear to you. The mean height of a random sample of 90 plots of variety V1 was found to be 240 with standard deviation 18 centimeter. Another independent random sample of 60 plant of variety 2 gave the mean height of 195 centimeter with standard deviation 15 centimeter। Is there any difference between the mean height of two variety? आपको दिया क्या हुआ है, पहले सैंपल का साइज दिया हुआ है 90, सो दिस इज n1, दूसरे सैंपल का साइज दिया हुआ है 60, दिस इज n2। द मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल इज गिवन टू x1 x बार एंड दिस इज s1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये आपका y बार है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी s2 है। सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन टू यू। इट इज गिवन दैट variety 1 x bar is 240, number of sample size is 90 and s1 is 80। in variety 2 mean is 195 and sample size is n2 which is 60 and s2 is 50, and you want to test alpha 0.05, so alpha is also given to you। our hypothesis will be
mu1 is equal to mu2. Alternate, mu1 is not equal to mu0. ठीक है. Then test statistics, as usual, you compute z calculated, which is nothing but x bar minus y bar, divide it by s1 square upon n1 plus s2 square upon n2. तो यहाँ x बार 240 है, y बार 195, standard deviation s1 square 18 square 15 square, and you find it out as 16.61. Now your z tabulated, since level of significance is 0.05, so it is 1.96. Now this z calculated value is compared with this value. 16.61 is greater than 1.96. It means reject द एच नोट. एच नोट में हमने क्या माना था कि दोनों पॉपुलेशन का मीन एक जैसा है, वो आपने रिजेक्ट कर दिया. इट मीन्स कंक्लूजन इज दैट देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन हाइट्स ऑफ टू वेराइटी. राइट. सो in conclusion, our z calculated, which is 16.61, is greater than z tabulated, which is 1.96. We reject h naught and we conclude that there is a significant difference between mean heights of two varieties. So in next lecture we will discuss two sample t-test, paired sample t-test, and so forth. So thank you very much. If you find this video is beneficial for you, please subscribe my channel so that the notification आपको मिल सकें. अगर आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.